Generation, what is your generation? That's a big question. I mean, quite often आपको सुनने में आता है कि आप जनरेशन ट्रेडिशनलिस्ट हैं या फिर साइलेंट जनरेशन हैं या फिर आप एक्स हैं या अल्फा हैं. यू कीप हियरिंग ऑल दिस वर्ड्स. और आजकल सोशल मीडिया के आने के बाद ये जनरेशन वर्ड, कौन सी जनरेशन से आप बिलोंग करते हैं, और भी ज़्यादा बात किया जाने लगा. देखता हूँ आपका जनरेशन कहाँ है, कैसे है, और क्या जो एक्सपेक्टेशन है आपके जनरेशन से उससे आप मैच करते हैं या नहीं, या आपका जो परसेप्शन है आपके जनरेशन के बारे में वो सही है या दुनिया के परसेप्शन से कितना अलग है. जनरेशन, अगर मैं इसको एकेडमिकली देखूं तो ये वर्ड लैटिन ओरिजिन का है. जनरेशन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, जनरेशियो से निकला हुआ वर्ड है, टू प्रोड्यूस या प्रोडक्ट या ब्रिंग आउट. दैट्स व्हाट जनरेशन इज ऑल अबाउट. इसमें कई कैटेगरीज हैं. स्टार्ट करें अगर हम 20th सेंचुरी के फर्स्ट ग्रुप को, तो उनको ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं, या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट जनरेशन, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए होंगे और इनकी संख्या बहुत कम है. और ये वैसे लोग हैं जो 1901 से 1927 के बीच में पैदा हुए होंगे. और ये लोग हैं जिनको सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी. ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा है, एंड देन दे आर नोन एज द ग्रेट जनरेशन. द सेकेंड कैटेगरी दैट वी हैव गॉट इज द साइलेंट जनरेशन. Silent generation, which is where 1928 से लेकर के 1945 के जनरेशन वाले लोग ये आते हैं इसमें. और इसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा है, एंड देन दे आर ऑल्सो वेरी बिग कन्फर्मिस्ट, और दे हैव वर्क टूवर्ड्स, शैल वी से, कम्युनिटी बिल्डिंग पे इन्होंने काम किया है. कम्युनिटी बिल्डिंग पर इनका विशेष फोकस था, एंड दैट इज व्हाट दे कॉल्ड एज साइलेंट जनरेशन. दे हैव accepted things as was existing during that time. Probably the effect of world wars had big profound bearing on this generation. The third generation are the baby boomers. Baby boomers में 1946 से 1964 की जनरेशन आती है. I think colonialism खत्म होती है बहुत सारी जगहों से, वर्ल्ड वॉर का एफर्ट खत्म होता है, और probably this is the biggest generation living on this planet today. I think I would like to add here कि ये एक ऐसा जनरेशन है जो कि आइडियलिज्म और ऑप्टिमिज्म को दे हैव ट्राइड टू मिक्स अप. They believe in work-life balance, not in a very strong sense of the word, but this is the generation, the baby boomers. They have faced civil war, and then kind of civil war movement. They have seen Vietnam War, and then definitely the coming of age of the Cold War that they have seen. Then after baby boomers, we have got the next one, which we can call them as Generation X. Generation X, 1965 to 1980 is the Generation X that they called. And then they are the ones who have seen computers. AIDS have been a major event of their time. Cold War intensified. Computer got married with satellite. I think then the IT was born subsequently. That's what was happening during this time. And then they are like also known as a generation which is latchkey generation, because here we find that both parents were working, or the single parent was raising the child. So this is quite often, this Generation X is also referred as latchkey generation. And then here the work-life balance ka importance has also grown at the same time. Then aata hai the next one that we have got is the millennial that we call it. Millennial को Generation Y भी कहते हैं. ये 1981 से 1996 का जनरेशन है. And then they are the ones who have been witness to 9/11 event. The Great Recession का भी इनके ऊपर मिलेनियल पे फर्क आता है. And then they are the one who tested right from their childhood the digital age. And I think उन्होंने starting से देखा है, they have got social consciousness also very heightened in this generation. Technology adaptation इनमें काफ़ी अच्छा हो गया था, and they accepted this as a part of life, and they believe in meaningful life. That's what something which they understand best, and that is what it's not my generation, so I would not comment too much on this. If you belong to this generation, आप खुद अपने बारे में सोचें कि क्या ये characteristics आपके मैच करते हैं कि नहीं. Then comes Generation Z. Generation Z is 1997 से 2012 का generation है. They have focused on climate change पे focus किया है. Social media, that is when they
have seen right from the beginning the rise of social media, and then इनके अंदर entrepreneurial skill बहुत ज़्यादा है. They have tried doing something on their own, of their own. बहुत ही social activism वाली generation है. ये generation doesn't accept much on the authority. In fact, they have creativity and they can question the authority very easily, and that's something which is very very इनमें digital citizen हैं ये सारे के सारे. इनको I think जो they prefer eating which is whatever being eaten anywhere in the world, whatever thing. They dress like the way the world is dressing without waiting for a few years for the trend to change. They change the trend as soon as possible, and they are very independent thinkers. So this Gen Z or Generation Z, whatever we call it, they are very independent thinkers of its own kind for the first time living in this planet like that. Then we come with the current one, that is Generation Alpha. Generation Alpha is the one, those people who were born after 2013, and then there is a marked change in the kind of टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी इनकी बहुत फास्ट है. जनरेशन Z ने टेक्नोलॉजी अडेप्ट किया था, बट इनकी एडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है. अगर आप बात करें जनरेशन Z एंड जनरेशन अल्फा में, तो टेक्नोलॉजी एडेप्शन का जो रेट है इनमें बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जो अलग अलग रेट पे देखते हैं कि जनरेशन अल्फा इज वेरी फास्ट इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, एंड देन दे आर द वन, दे हैव आई थिंक द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ देयर generation is going to be COVID. I think you all know that, and they are the one who are generation which is also seeing the emergence of AI. So this generation is going to have a lot of things to really look forward to or watch for, and then they are basically they are very independent generation as it is coming up, and they are taking things with a pinch of salt. Like Generation Z, which was influenced by the social media more, I think they are taking social media with a pinch of salt, and that is what one would expect that it should have happened this way. And I'm glad the Generation Alpha is not taking the things the way it is presented with them. और आप देखेंगे कि ये जो जनरेशन अल्फा है इसके और भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. आई एम नॉट श्योर इफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आई वाज ट्राइंग टू शेयर दे एक्चुअली मैच विथ योर जनरेशन और नॉट. दीज आर ऑल वेरी बेसिक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो लोगों ने बना रखे हैं ऐसे ऐसे जनरेशन की इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, इनके डिफाइनिंग मोमेंट के साथ. बट ऑफ कोर्स यू आर स्पेशल, aren't you? So definitely if you don't match with some of the characteristics I mentioned, you definitely have got something which is special in you. All the best.